So in the last lecture that I forwarded you yesterday, we discussed impedance. Uh, so just a brief recap. Impedance is simply an analogous. It's an analogous term to resistance. What we have seen resistance doing in DC circuits, impedance does the same in case of AC circuits. Actually, much more than that. If we talk about resistance, what does resistance do? As the resistance increases, the value of the magnitude of current decreases in a DC circuit. So, resistance only alters the magnitude of current. But as far as impedance is concerned, it not only alters the magnitude of current, but also its phase. It alters both the magnitude of current as well as the phase of the current. Now here the current will actually be a phasor quantity. It will have both magnitude as well as direction. Direction is actually denoted by what in the complex plane by the phase that it will make with the real axis. So impedance alters both the magnitude as well as the phase of this current. So we have done one numerical also on this, and uh, those basic circuit laws that we had discussed in case of DC circuits, they are still valid. I'll just run through them. The basic circuit laws, like we had discussed KVL, we had discussed KCL, so they are still applicable in AC circuits, uh, applicable to AC circuits as well. We had discussed the current divider law, the voltage divider law. Uh, so these are applicable to AC circuits as well. There is actually no difference between hardly any difference in any of the circuit laws that are applicable to DC circuits. They are also applicable to AC circuits. Also, as far as impedance is concerned, impedance follows the same principles as that, the same algebraic principle as that of a resistance. So, impedance in series simply if you have different impedances. Say for example, you have an element with an impedance Z1, you have an element with an impedance of Z2, you have an element with an impedance of Z3, so on. They are in series. So total impedance will be simply the summation of these impedances. Of course, now here Z1, Z2, Z3, it's not a real number, it's a complex number. So accordingly, you will have to follow the laws of complex algebraic laws of complex numbers as well. And if you have impedances in parallel, Z1, Z2, Z3, so on, total Zt will be given by 1 by Z1 plus 1 by Z2 plus 1 by Z3. So 1 by Zt will be equal to 1 by Z1 plus Z2 plus Z3. So these circuit laws are applicable to both DC circuits as well as AC circuits. Similarly, then you have the nodal analysis, you have the mesh analysis. As we have seen in case of DC circuits, we can apply the same analysis to AC circuits as well. Fine. So there is a little bit of difference in case of you can say in case of the theorems that will be applying. वो हम बाद में देख लेंगे. अभी हम जो basic circuit laws है उस पे based upon that we'll be doing some numericals on AC circuits as well. Fine. We had also seen star delta configuration of resistances.
We have Z1, Z2, Z3. They are in delta, and you have mm, ZA, ZB, ZC. Fine. You have ZA, ZB, ZC, and you have Z1, Z2, Z3 here. So as we have seen in case of star delta transformation with resistances, same uh, formula is applicable to impedance as well. So we can find out ZA, where ZA will be equal to Z2, Z3 divided by Z1 plus Z2 plus Z3. ZB will be equal to Z1, Z3 divided by Z1 plus Z2 plus Z3, and ZC will be equal to Z1, Z2 divided by Z1 plus Z2 plus Z3. So you can derive star impedances from the delta transformation, or if you have already the del star available to you and you want to find out the delta impedances, so Z1 will be equal to ZA, ZB plus ZB, ZC plus ZC, ZA divided by Z1, ZA. As a Z2 will be equal to ZA, ZB plus ZB, ZC plus ZC, ZA divided by ZB, and Z3 will be equal to fine. So these basic circuit laws, the mesh analysis, the nodal analysis, the current divider laws, voltage divider laws, KVL, KCL, etc. As we have seen in case of DC circuits, same will be applicable to AC circuits. uh, only thing the difference between AC and DC is now DC में हमारे पास जो भी numbers values थे they were real quantities. Now here we have the values, we have these uh, currents, voltage, impedances. They are all complex numbers, they are all phasors. So you can apply either the phasor, you can either uh, have the voltage current in a complex form, or you can have it in a sinusoidal form, or you can have it in a phasor form. Whatever form you want to choose, that's up to you. आप कोई भी mathematical expression use कर सकते हो for that AC quantity, whether you want to express voltage in a simple as a complex number, or as a sinusoidal number, or as a phasor form. You can accordingly current और resistance को भी choose कर लो. You can apply these basic circuit laws as well as जो basic impedance की different impedances कैसे सीरीज में कनेक्शंस होती हैं impedances की, कैसे पैरेलल में कनेक्शन होती है, how impedances are connected in star and delta fashion. तो बेस्ड अपॉन जो भी हमने डीसी में किया था वही हम एसी में अप्लाई करके विल डूइंग सम न्यूमेरिकल्स. अभी तक हमने पावर डिस्कस नहीं किया इन एसी सर्किट. सो पावर इज एक्चुअली समवट डिफरेंट इन केस ऑफ एसी सर्किट्स, एंड इट विल बी जो हमें एक्चुअली इन डिटेल एक्चुअली थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा, but we'll take that up in 1 or 2 lectures. For now we'll be doing some numericals on the AC circuits based upon whatever we have actually seen in DC circuit analysis. जो basic analysis कि हमने किया था वहाँ पे वही हम यहाँ पे use करेंगे. Fine. So let us start with some impedances. Let's find out impedances of some circuits. Say for example you have been given a circuit like this.
You have a capacitance here of 2 microfarad. You have a inductor of zero point 0.2 Henry. You have a resistance of 3 ohms, a 10 microfarad capacitor, and an 8 ohm resistance. You want to find out the net impedance of this circuit. Fine. So to calculate the net impedance, uh, we should also know for one thing that is important to find out the impedances is we need to know what is the value of omega. Let omega is given here is 50 radians per second. Fine. So we can now find out the net individual impedances first of all. So this 2 microfarad will be having an impedance of 1 by j omega c. J omega is 50, c is 2 into 10 raised power minus 3, and this point 2 Henry, this is an inductor की जो impedance है that is j omega l. So this is j omega is 50, l is 0.2. This 8 ohm resistor will be having an impedance of 8 ohm. This 3 ohm resistance will be having, these are all in ohms now, in सबके units ohms में. This 3 ohm will be having an impedance of 3 ohms. This capacitor will be having an impedance of 1 by j omega c. C is 10 into 10 raised power minus 3 ohms. So you can redraw the circuit uh, showing these impedances by uh, these squared boxes. So अब आपके पास ये configuration है, so you can simply mathematically इसको अब आप solve कर सकते हो. तो यहाँ से जो ये total impedance है, this becomes 8 plus 50 into 0.2, that is 10j. जो बीच वाली leg है इसकी जो impedance है, this becomes 3 minus j. जब ऊपर जाता है तो माइनस सिंबल आ जाएगा, माइनस j डिवाइडेड, यस, दिस इज 500 इंटू 0.5, तो ये ऊपर 2 आएगा. और ये वाली impedance, this is minus j, this is 0.1, this is minus 10j. ठीक है. तो अब आपके पास तीन impedances रह रही हैं यहाँ पे. So these two are in parallel and that will be in series with minus 10j. So ZT will be now equal to 3 minus j2, 8 plus 10j, 3 minus 2j, 8 plus 10j, they are in parallel, plus minus j10, minus 10j. Fine. So this is simply 3 minus 2j into 8 plus 10j divided by 3 minus 2j plus 8 plus 10j minus 10j. So
तो ये आपका 3.22 माइनस 1.07 J आएगा माइनस 10J। यस। ठीक है, तो सार इस 8 ओम रेजिस्टर की इम्पीडेंस 8 ओम ही है। 0.2 Henry, the resistance of inductor is J omega L. Impedance of capacitor is 1 by J omega C, or you can say minus J by omega C. तो सबको कन्वर्ट किया, फिर जो जैसे रेजिस्टेंसेस को करते हैं सीरीज में एड अप इम्पीडेंसेस, पैरेलल में जैसे रेजिस्टेंसेस को 1 divided by Z1 plus 1 by divided by Z2. So you can find out the net impedance of the circuit. That will be 3.22 minus J 11 point minus 11.07 J. Fine. So ये तो हो गया ये। हाँ, अब आपके पास तो कोई चारा ही नहीं है। एसी सर्किट्स में तो आपको ये जरूरत ही जरूरत है। तो वो तो अब सीख ही जाओगे। You can also convert this into polar form using your scientific calculators. 11.52 angle minus 73.77 degrees। ठीक है, तो जब आपके पास polar form है, you can also find out its sinusoidal form. कैलकुलेटर तो मस्ट है। ये जो मैंने किया था मैंने कैलकुलेटर से सॉल्व किया। Find out the total impedance of this circuit. This is 1 microfarad capacitor. This is 100 ohms. This is 8 Henry. This is 1 microfarad. This is 200 ohms. Fine. Find out the net impedance of this circuit. तो omega is 10 radians per second. Omega for this is 10 radians per second. So this is minus J by 10 into 10 raised by minus 3. This is 100. This is these many ohms. This is 100 ohms. This is minus J divided by 10 raised by minus 3 ohms. This is J 8 ohms. This is 200 ohms. Find out the total impedance ZT now. ZT का क्या वैल्यू आएगा? अभी आपके पास एटलीस्ट मोबाइल्स तो हैं, आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो। यू कैन सिंपली डाउनलोड साइंटिफिक कैलकुलेटर्स फ्रॉम योर प्ले स्टोर ऐप।
हम्म कौन सा जे वाला? तो ये जो सर्किट है आपका, यहाँ पे 100 माइनस जे, जे 100 है। डिवीजन में यहाँ पे 0.01, तो 100 आ गया। 100 माइनस जे, ये आपका माइनस 1000 जे हो गया। ये आपका 200 प्लस जे 8 है, 200 प्लस 8 जे, फाइन। तो आपका जो जेड टी है दैट इज 100 माइनस 100 जे प्लस 200 प्लस 8 जे into minus 1000 j divided by 200 plus 8 j minus 1000 है। कहाँ पे? अच्छा अच्छा, ठीक है। जे बाई, अच्छा ओमेगा यहाँ पे भूल गया, यहाँ पे भी ओमेगा है। तो ये 80, दिस इज 80, दिस इज 100, दिस इज 80। तो ये अब आप एक्चुअली कैलकुलेटर पे सीधे कर सकते हो। Yes. 195 जे एग्जैक्ट आ रहा है। We have to find out V naught across this capacitor। ये जो कैपेसिटर, इसका वैल्यू 1/20 फेरेड है, ये 0.5 हेनरी है, this is 10 ohms here, this voltage is 50 cos 10t plus 30। ठीक है, तो एक्चुअली 50 cos omega t plus 5 है, that means from here you can directly say omega is 10, phi is 30 degrees, omega is 10 radians per second। So you have to find out V naught. For that we need to solve for the current I in this circuit। Vt आपको दिया हुआ है, it is given to you, it is 50 cos 10t plus 30 degree volts। So if this is in the sinusoidal form, you can put it directly in the polar form। polar form easier रहता है solve करना। So in polar form this is simply V angle 30 degrees। So ये आपका V हो गया। आपका जो total impedance है in this circuit ZT, it is equal to, इसका जो impedance है it is minus j by omega c 10 into 1/20
इसका जो इम्पीडेंस है डैट इज जे ओमेगा एल, इसका जो इम्पीडेंस वो 10 हेनरी है. So you have 10 in parallel with 5J, and it then adds up with this impedance of minus J divided by minus 2J. So 10 parallel 5J means 50J divided by 10 plus 5J minus 2J. This is 50J. 2 plus 2J. Fine. तो टोटल ZT आपका 2 plus 2J है. तो कैलकुलेटर्स पे आप डायरेक्टली इसको आर एंगल थीटा फॉर्म में भी पुट कर सकते हो. सो दिस इज 2.82 एंगल 45 degrees. So Z is given to us, V is given to us, I therefore will be equal to V divided by Z. V is 50 angle 30, Z is 2.82 angle 45 degrees. तो ये 50 divided by 2.82, 17.73 एंगल माइनस 15 डिग्रीज. तो ये आपका Z है, ये आपकी करंट है एक्चुअली. सो हमें क्या निकालना है? वी हैव टू फाइंड आउट V नॉट. वी हैव टू फाइंड आउट वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर. अगर ये आपकी करंट है, वोल्टेज अक्रॉस दिस कैपेसिटर विल बी current into this impedance minus J divided by 10 into 0.1 by 20. So V naught will therefore be equal to 17.73 angle minus 15 degree into minus 2J. .73 angle minus 15 into minus 2J. So upon solving, this comes out to be minus 9.17 minus 34.25 J. ठीक है. V नॉट आपका minus 9.17 minus V नॉट आपका जो आया minus 9.17 minus 34.25 J. You can again put it in the polar form. Polar form में ये 35.46 angle minus 105 degrees आएगा. You can also put it in the sinusoidal form. V naught आपका 35.46 cos of omega t. omega t सेम रहता है, जो ओरिजिनल था tan t माइनस प्लस फाइव, यहाँ पे 5 minus 105 है. तो ये आपका इसका साइनोसाइडल फॉर्म हो गया. ठीक है. तो यू कैन पुट इट इन एनी ऑफ दीज थ्री फॉर्म्स. ये एक ही चीज है. यस. ऑन योर कैलकुलेटर यू मीन? अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं है तो आपको मैग्नीट्यूड पहले निकालना है. तो मैग्नीट्यूड इसका अंडर रूट ऑफ 9.17 स्क्वायर प्लस माइनस 34.25 स्क्वायर हो गया, तो आपका 35.46 मिलेगा वहां से. एंड योर एंगल हेयर इज tan इनवर्स ऑफ माइनस 34.25 डिवाइड बाई माइनस 9.17, तो वो आपका -105 मिल जाएगा. अगर आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर्स हैं तो यहाँ पे
मुझे अब पता नहीं आपके पास कौन सा साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जैक्टली है, बट जो कैसियो का FX991 सीरीज है उसमें शिफ्ट, आपको शिफ्ट दबाना है, फिर यू हैव टू चूज द नंबर 2 आई गेस, जहाँ पे ऊपर लिखा हुआ होगा कॉम्प्लेक्स CMPLX कुछ, ठीक है। तो वहाँ पे फिर डिफरेंट ऑप्शंस आ जाएंगे। उसमें एक ऑप्शन होगा, मोस्ट लाइकली थर्ड ऑप्शन होगा, आर एंगल थीटा। तो वो जो आपका रिजल्ट है वो आर एंगल थीटा फॉर्म में आएगा, या किसी किसी कैलकुलेटर में डायरेक्टली वो ऑप्शन बाहर ही दिया हुआ होता है। यू कैन सिंपली प्रेस शिफ्ट सम नंबर 3 आई थिंक, it directly converts from complex to r angle theta form. Or you can go to your settings also on your calculator. उसमें फिर कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना है सेटिंग्स में, मोड में जाके कॉम्प्लेक्स नंबर चूज करना है। वहाँ पे जो रिजल्ट है आपका, it will show whether you want to display it as a complex number a plus iota b form, or you want to display it as r angle theta form. So you can keep it by default r angle theta, so that आपको डायरेक्टली रिजल्ट r angle theta फॉर्म में मिल जाए। तो आप अपने कैलकुलेटर्स को भी एक्सप्लोर कर सकते हो, फाइंड आउट वेरियस इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो भी आपके पास दिए हुए होंगे। जो मैं जो कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ, मैं एक्चुअली ऐप स्टोर से यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो कैलकुलेटर है इसका नाम हम वो मैं सेंड कर लूँगा। वैसे इसका नाम साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लस एडवांस्ड साइंटिफिक कैलकुलेटर प्लस एडवांस्ड 991 प्लस है, 991 CLC है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं वो देख लूँगा। फाइन। ओके, तो कैलकुलेटर तो अब ज़्यादा ज़रूरत है आपको। फाइंड दिस करंट। 60 एंगल 0 डिग्रीज वोल्ट्स, 50 ohms, डिग्री में। अगेन वो आप कैलकुलेटर पे ऊपर पहले सेटिंग करके रख लो कि वट एवर एंगल यू आर फीडिंग इट इन डिग्रीज। फाइंड आउट दिस करंट I नॉट। These values are already given to you, ये ऑलरेडी आपको इम्पीडेंस दी हुई है इस 80 J 80 ohms, 80 J।
तो आपको इम्पीडेंसेस पहले दी हुई हैं, आपको इम्पीडेंस निकालने की जरूरत नहीं है इसमें. So that's why you don't actually need omega for this circuit. हम्म. कितना आ रहा है? हाँ, तो आप ऐसे किसी जिसके पास कैलकुलेटर वो एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बता दे, आर एंगल थीटा फॉर्म में. What will be the value of this current? 2.16 तो नहीं है. हाँ, 2.16. 2.16 प्लस. नहीं नहीं. This is 9.43. 9.43 इसका जो आंसर है that is 499.7. It's actually 499.7 angle minus 28.85 डिग्री मिली एम्पियर. दैट मीन्स आपका आंसर 0.4 कुछ आना चाहिए. 0.4 एंगल माइनस 28.85.
हेलो हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ, हो क्या ये? Yes, 1 minute. Yes. No, not it. Yes. बोलो। हाँ, हो गया ये। So this impedance here is 100 minus 40J. It's in parallel with 80J. So 100 minus 40J into 80J divided by 100 minus 40J plus 80J. That is then in plus 50 ohms. आपकी total impedance मिल जाएगी, तो I naught will be 60 angle 0 divided by this impedance. तो ये सिंपल कैलकुलेशन है। अगर आपके पास कैलकुलेटर्स होंगे तो आप ये सॉल्व कर पाओगे इजीली। तो मसला तो मुझे लगता है अभी पहले आपका